1 verdict, noun. फैसला, ज्यूरी का फैसला. A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. 2 aggravate, verb. बदतर करना, शदीद तर करना, बढ़ाना. Make a problem, injury, or offense worse or more serious. 3 defiant, adjective. निडर, ढीठ, बेबाक. Showing defiance. 4 partisan, noun. तरफदार, सख्तगीर, कट्टर. A strong supporter of a party, cause, or person. 5 intensify, verb. शिद्दत बढ़ाना, तेज करना. Become or make more intense. 6 fray, verb. झगड़ा, लड़ाई, रगड़ना. Of a fabric, rope, or cord, unravel or become worn at the edge, typically through constant rubbing. 7 neutrality, noun. अलहदगी, गैर जानिबदारी. The state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, etc., impartiality. 8 divergence, noun. अदम इत्तेफाक, तजाद, इख्तिलाफ. The process or state of diverging. 9 reckless, adjective. आक़िबत नाअंदेश, लापरा, बेपरवाह. Heedless of danger or the consequences of one's actions, rash or impetuous. 10 sanctity, noun. तक़द्दुस, सफाई, पाकीज़गी. The state or quality of being holy, sacred, or saintly. 11 ominous, adjective. मनहूस, बदनाम. Giving the worrying impression that something bad is going to happen, threateningly inauspicious. 12 reminiscent, adjective. याद दिलाने वाला, याद आवर. Tending to remind one of something. 13 revolt, verb. फिर जाना, बगावत, इन्हिराफ. Take violent action against an established government or ruler, rebel. 14 fragile, adjective. नाजुक, कागजी, आसानी से टूट जाने वाला. Of an object, easily broken or damaged. 15 confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Predictably, the three-member Supreme Court bench headed by the Chief Justice ruled on Tuesday that the decision by the Election Commission of Pakistan to postpone elections to the Punjab Assembly was unconstitutional. The court announced May 14 as the new polling date. It ordered the government to provide the required funds to the ECP and ensure security for the exercise. These two issues had been cited by the ECP as the reason for its decision to postpone elections. Last month, the Supreme Court had ordered the ECP to hold elections to the KP and Punjab assemblies, dissolved earlier this year, within the stipulated time frame of 90 days. The voting date for the Punjab Assembly was initially supposed to be April 30, but was abruptly changed to October 8. It was clear that the ruling alliance was not ready to hold elections. Lack of funds and the worsening security situation were cited as the reason for the delay. Now the government is bound to comply with the court order. But the game is certainly not over as the ruling coalition has rejected the order. The judgment has changed the country's political landscape. While it has come as a huge setback to the ruling coalition, the opposition PTI is celebrating the decision as a vindication of its position. In a hard-hitting statement, the federal government has challenged the validity of the ruling by the three-member bench, and has reiterated its demand that the case should have been heard by the full court. The federal law minister has warned that the verdict would aggravate the current political crisis. Non-compliance with the court's orders will cause matters to spin out of everyone's control. The ruling coalition is on a defiant path. It has made it clear that it won't comply with the court's order that it describes as minority and partisan. Some ministers have not even ruled out the possibility of declaring a state of emergency. But such a move would be seen as a virtual declaration of war against the top court,
and pit the two institutions of state against each other, with disastrous consequences. Going against the order would intensify the clash of institutions and deepen the constitutional crisis, bringing the country closer to a systemic collapse. There is a fear that the crisis could also suck the security establishment more deeply into the political fray. Notwithstanding its claims of neutrality, the military is not totally out of the game. There are strong indications that the military leadership is not in favor of early or scattered elections, with the Defense Ministry asserting that the armed forces would not be available for poll security duties because of the security situation. Unlike in the recent past, when the judiciary was seen to go along with the security establishment, its latest position on polls in Punjab and KP indicates a divergence of views within. Among other factors, the fear of the PTI sweeping the polls has brought the establishment closer to the government's position. But non-compliance and its consequences will cause matters to completely spin out of everyone's control. And a move to get the army directly involved in emergency rule could spell disaster for both the country and its institutions. With the political process hitting a dead end, the battleground has long been shifted to the highest court. Caught in the middle of a reckless power game that has divided the country, it was hardly possible for the Supreme Court to stay clear of controversy when it took up the petition against the postponement of elections in Punjab and KP. The court was already seen as divided on the issue of suo motu action taken earlier by the Chief Justice on setting an election date for the two dissolved assemblies. But the composition of the bench that was hearing the petition apparently intensified the war within. Split down the middle, the apex court is now fighting a desperate battle to maintain its sanctity. The authority of the Chief Justice is seen as being challenged by the ruling coalition and some of his fellow judges. In fact, many among the 15 members of the apex court appear to have reservations regarding the Chief Justice's powers, demanding that the absolute authority of his position to constitute benches be curtailed. The conflict has taken a more ominous turn as the disagreements have come out into the open. Observers have said that the situation is reminiscent of the judges' revolt against then Chief Justice Sajjad Ali Shah in 1997, that ultimately led to the ouster of the latter. While one cannot predict a similar fate for the current Chief Justice, many opine that the split has weakened his position in the run-up to his retirement in a few months. Unfortunately, the division has rendered the court's ruling controversial. It is a huge blow to the rule of law. The view that the concentration of powers in the office of the Chief Justice raises questions about the impartiality of the judicial system and underscores the need for reform is not without substance. But the move to change the rules through an act of parliament has reinforced suspicions about the government trying to exploit the judicial divide for its own political ends. Many legal experts maintain that the change in rules should have been left to the Supreme Court itself. Meanwhile, the clash of institutions and ongoing frictions have eroded the writ of the state. With the country in the midst of an economic meltdown and with the democratic political process on very shaky ground, any deviation from the Constitution will further weaken an already fragile polity. There is still time for the rival political forces to step back from their hardline positions and come to the negotiating table. In an atmosphere of confrontation, it will not be possible to hold free and fair elections. By undermining the authority of the Supreme Court, the politicians will only strengthen the forces of Bonapartism. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, April 5, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने पोलिंग की नई तारीख 14 मई मुकर्रर की है। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि वो इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फंड्स फराहम करे और इस अमल के लिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले की वजह इन दोनों मामलात को करार दिया गया था।
गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों के इंतखाबात 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में कराएं। पंजाब असेंबली में वोटिंग की तारीख पहले 30 अप्रैल होनी थी, लेकिन अचानक इसे तब्दील करके 8 अक्टूबर कर दिया गया। ये वाज़ेह था कि हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं था। फंड्स की कमी और सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल को ताख़ीर की वजह करार दिया गया। अब हुकूमत अदालती हुक्म की तामील करने की पाबंद है, लेकिन खेल यकीनी तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद ने इस हुक्म को मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले ने मुल्क का सियासी मंजरनामा बदल दिया है। अगरचे यह हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक बड़ा धचका है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात PTI इस फैसले को अपने मौक़िफ़ की तौसीक के तौर पर मिना रही है। एक सख्त बयान में वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच के फैसले के जवाज़ को चैलेंज किया है और अपने इस मुतालबे का आदा किया है कि इस केस की समाअत फुल कोर्ट में होनी चाहिए थी। वफाकी वज़ीर कानून ने मुतनब्बे किया है कि इस फैसले से मौजूदा सियासी बहरान मज़ीद बढ़ जाएगा। अदालती अहकामात पर अमल न करने से मामलात सबके काबू से बाहर हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद बाग़ियाना रास्ते पर गामज़न है। उसने ये वाज़े कर दिया है कि वो अदालत के हुक्म की तामील नहीं करेगी, जिसे वो तक़लियत और जानिबदार करार देती है। कुछ वज़रा ने हंगामी हालत के ऐलान के इम्कान से भी इनकार नहीं किया है, लेकिन इस तरह के अक़दाम को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐलान जंग के तौर पर देखा जाएगा और रियासत के दोनों इदारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, जिसके तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इस हुक्मनामे के खिलाफ जाने से इदारों का टकराव शिद्दत इख्तियार करेगा और आईनी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा, जिससे मुल्क निज़ाम के खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। इस बात का खदशा है कि ये बहरान सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासी मैदान में मजीद गहराई तक ले जा सकता है। गैर जानिबदारी के दावों के बावजूद फौज इस खेल से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं है। इस बात के पुख्ता इशारे मिल रहे हैं कि फौजी क़ियादत क़ब्ल अज़ वक्त अब बिखरे हुए इंतखाबात के हक़ में नहीं है। वज़ारत दिफ़ा का इसरार है कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से मुसल्लह अफ़वाज इंतखाबी सिक्योरिटी फ़्राइज़ के लिए दस्तयाब नहीं होंगी। माज़ी करीब के बरक्स, जब अदलिया को सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हुए देखा गया था, पंजाब और KP में इंतखाबात के बारे में इसका ताज़ा तरीन मौक़िफ़ अंदरूनी ख़यालात के इख्तिलाफ़ात की निशानदेही करता है। दीगर अवामिल के अलावा PTI के इंतखाबात में कामयाबी के खौफ ने इस्टेब्लिशमेंट को हुकूमती पोजीशन के करीब ला खड़ा किया है, लेकिन अदम तामील और उसके नताइज मामलात को मुकम्मल तौर पर हर एक के कंट्रोल से बाहर करने का सबब बनेंगे और फौज को बरा रास्त इमरजेंसी में शामिल करने का अक़दाम मुल्क और उसके इदारों दोनों के लिए तबाही का बाइस बन सकता है। सियासी अमल के इख्तिताम को पहुंचने के साथ ही मैदान जंग तवील अरसे से आला तरीन अदालत में मुंतकिल हो चुका है। मुल्क को तकसीम करने वाले ताकत के लापरवाह खेल के बीच में फंसे हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए पंजाब और KP में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान तनाज़ात से दूर रहना शायद ही मुमकिन था। चीफ जस्टिस की जानिब से तहलील होने वाली दोनों असेंबलियों के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने पर अज़ खुद नोटिस लेने के मामले पर अदालत पहले ही मुनक़सम दिखाई दे रही थी, लेकिन दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच की तश्कील ने बज़ाहिर अंदर जंग को तेज कर दिया। बीच में तकसीम होकर सुप्रीम कोर्ट अब अपने तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए एक मायूस कुन जंग लड़ रही है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को हुक्मरान इत्तेहाद और उनके कुछ साथी जजों की जानिब से चैलेंज किया जा रहा है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट के 15 अरकान में से बहुत से कुछ चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुतालबा करते हैं कि बेंच तश्कील देने के लिए उनके ओहदे के मुकम्मल इख्तियार को ख़त्म किया जाए। इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आने के बाद तनाज़ा ने मज़ीद मनहूस रुख इख्तियार कर लिया है। मुबस्सरीन का कहना है कि यह सूरत हाल 1997 में इस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ जजों की बगावत की याद दिलाती है, जिसके नतीजे में उन्हें बरतरफ कर दिया गया था। अगरचे मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए इसी तरह के अंजाम की पेशगोई नहीं की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस तकसीम ने कुछ महीनों में उनकी रिटायरमेंट से कब्ल उनकी पोजीशन को कमज़ोर कर दिया है। बदकिस्मती से इस डिवीजन ने अदालत के फैसले को मुतनाज़ा बना दिया है। यह कानून की हुक्मरानी के लिए एक बहुत बड़ा धचका है।
ये ख्याल कि चीफ जस्टिस के दफ्तर में इख्तियारात का इर्तिकाज अदालती निज़ाम की गैर जानिबदारी के बारे में सवालात उठाता है और इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर करता है, बेबुनियाद नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के एक कानून के जरिए कवानीन को तब्दील करने के अक़दाम ने उन शुकूक और शुबहात को तक़वियत दी है कि हुकूमत अपने सियासी मकासद के लिए अदालती तक़सीम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बहुत से कानूनी माहिरीन का कहना है कि कवायद में तब्दीली को खुद सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाना चाहिए था। दरियासना इदारों के तसादुम और जारी कशमकश ने रियासत की रत को ख़त्म कर दिया है। चूँकि मुल्क माशी बहरान का शिकार है और जमहूरी सियासी अमल इंतहाई मुतज़्ज़ल सतह पर है, आइन से इन्हिराफ पहले से ही कमज़ोर सियासत को मज़ीद कमज़ोर करेगा। अब भी वक्त है कि हरीफ सियासी कुव्वतें अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हट और मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं, क्योंकि महाज आराई के माहौल में आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कमज़ोर करके सियासतदान सिर्फ बोनापार्टिज़म की कुव्वतों को मजबूत करेंगे। मज़मून निगार मुसन्निफ़ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 5 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.